Now we are on part 2 of synthetic fibers and plastics. In the previous video we have seen what are the different types of fibers and what are the categorization in terms of synthetic fibers. Right now in this second part we are going to see a topic on plastic. Okay, we will see that what are plastics, what are the different types of plastics, where it is being used, and then the advantages of this or disadvantages of the plastics. Now we'll start with the first part, that is plastics. What are plastics? We know that in our day-to-day life plastic is being applied everywhere. So you can see that some of the applications of the plastics are given here. We used to make plastic bottles. Okay, we used to make plastic containers for household purposes. We use to make microwave appliances. Okay, माइक्रोवेव के जो सामान होते हैं जो हाईली रेजिस्ट करते हैं टेम्परेचर को, जो इजीली मेल्ट नहीं होते. इवन इन केमिस्ट्री लैब यू माइट हैव सीन दैट सम ऑफ द प्लास्टिक्स इवन ऑन हीटिंग they will never melt, and that are the special characteristics of the plastics. And some plastics which can melt easily, and that is polythene. Okay, but what are the disadvantages over here? We are very much familiar that plastics कभी भी easily decompose नहीं होते. It take millions of years to decompose plastics, and it is harmful to environment. So this is what the application of our plastics. Now we'll see that what actual uses of plastics are there. Plastics find extensive use in healthcare industry. You might have seen that gloves होते हैं, PPE kits होते हैं, या फिर injections, bottles, medicines, हर एक चीज प्लास्टिक से रैप हुए रहते हैं. Okay, next is about special plastic cookware is used in microwave ovens for cooking food. So you have seen that some special kind of plastics are there which are available for microwaves, and Teflon is a plastic which oil and water do not stick. इसीलिए इसमें से पैन्स बनाए जाते हैं. देखना कुकिंग के लिए जो पैन यूज हुआ जाता है, नॉन स्टिक पैन हम ऐसा बोलते हैं. So that is made up of Teflon, which is a special kind of plastic in which oil और water चिपकते नहीं हैं. Next is यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन. तो वो भी एक स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक से बना रहता है जिससे वो इजीली फायर नहीं लगता उसमें. इट मींस इट डजंट कैच फायर इजीली, एंड इट इज heat resistance, and it doesn't burn easily. Now I'll see what are plastics. So first one, the definition is plastic is a polymer like a synthetic fibers. Synthetic fibers में हमने क्या देखा था? The fibers which are artificial, but in that artificial फाइबर्स जो है वो एक पॉलीमर से बने होते हैं, यानी कि छोटे छोटे कंपाउंड से मिक्सअप होके एक फाइबर्स बनते हैं. सेम थिंग प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर, बट इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो थोड़ा अलग अलग रहता है. ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स. अगर उसका माइक्रो स्ट्रक्चर देखो, यू विल नॉट फाइंड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑल प्लास्टिक्स विल बी सेम. पॉलीथीन का कुछ अलग होगा, या फिर बॉटल्स के जो प्लास्टिक है उसका जो स्ट्रक्चर होगा अलग होगा. अभी मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर हियर? इफ आई जूम इट, अगर मैं जूम करते जाऊं प्लास्टिक को, तो व्हाट द माइन्यूट, मतलब जैसे कि हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं वैसे ही यहाँ पे उसके जो स्ट्रक्चर होंगे, जो अरेंजमेंट होगा, दैट विल बी डिफरेंट. इन सम इट इज लीनियर, वेयर इट इज अदर इट इज क्रॉस लिंक. अब लीनियर मतलब क्या? तो लीनियर मीन्स व्हाट? ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन. और क्रॉस लिंक मतलब क्या? ऊपर नीचे and horizontal. I'll show you one figure over here so that you can easily analyze. A is an example of linear arrangement, okay, and B is an example of cross link arrangement. Cross link मतलब क्या? एक दूसरे से alternately मतलब jointed, but linear में क्या है? straight जाएगा. So this is what a different kind of arrangements in plastics. In this plastics we'll see the first part, what that is plastics can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets, or made into wires. So this we know that
प्लास्टिक्स को हम, हाँ, द बेनिफिट इज दैट वी कैन रिसाइकल एंड रीयूज, तो बार बार तुम उस प्लास्टिक को रीयूज कर सकते हो. दैट इज व्हाई इट इज फाइंड्स सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस, इसीलिए इसका यूजेस बहुत बढ़ जाता है. दिस इज द फिगर ऑफ प्लास्टिक क्रिस्टल्स. जो प्लास्टिक बनते हैं बड़े बड़े कंपनियों में, वो ऐसे क्रिस्टल्स में अवेलेबल रहते हैं. इस क्रिस्टल्स को मेल्ट किया जाता है एंड बाय मेल्टिंग दिस वी कैन convert in terms of whatever we will convert in according to our shape and we will use it accordingly. but तुम बेस्ट एग्जांपल तुम्हें अभी मैं दिखाऊं, आपने देखा होगा ग्लू गन. आप ज्यादातर आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज करते हो ग्लू गन, कुछ भी स्टिक करने को. जैसे ही हम हीट अप करते हैं, व्हाट विल हैपन, हीट अप करने से वो प्लास्टिक मेल्ट होने लगता है और जहां पे भी हम अप्लाई करते हैं वो थोड़ी देर के बाद कूल हो जाता है और जिसकी वजह से वो स्टिक हो जाता है. सो इसका ये है, that is the structure of the that is the structure of plastics. Now we will see that what are the different types of plastics. Plastics are basically two types, that is thermosetting and thermoplastics. So we'll see now that what is thermosetting and thermoplastics. It is very important. और यही टॉपिक खत्म होने के बाद हार्डली वन टॉपिक विल लेफ्ट एंड द चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड इन द. So first of all, what is thermosetting plastics? So plastics which can be easily molded to any shape but cannot be remolded. Okay, now here molded means what, we can easily convert it from one shape to another, but बार बार तुम ये प्रोसेस नहीं कर सकते हो, ये थोड़ा ध्यान रखना. Thermosetting are hard and rigid. Thermosetting are hard and rigid. Example is bakelite and melamine. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. bakelite और melamine कहाँ पे यूज होगा वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे. And we'll see that bakelite is a poor conductor of heat and electricity. So bakelite and melamines are mostly used in making heat, mostly used in यूटेंसिल्स यानी कि कोई भी यूटेंसिल्स का हैंडल जो देखा होगा प्लास्टिक से बना होगा, दैट इज मेड अप ऑफ बैकेलाइट बिकॉज इट डजंट हीट अप इजीली. एंड इलेक्ट्रिसिटी मींस व्हाट, कॉपर वायर के ऊपर जो आपने प्लास्टिक्स देखे होंगे दैट इज मेड अप ऑफ बैकेलाइट. सो we'll see that the next is it is used for making electrical switches, जो मैंने अभी आपको कहा, handles of various utensils and melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than any other plastics. So melamine का जो use है mostly इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने के लिए यूज अप होता है. यू कुड सी दैट जैसे कि मिक्सचर ग्राइंडर है वो भी एक पर्टिकुलर काइंड के प्लास्टिक से ही बना रहता है. स्विच बोर्ड्स है, सो व्हाई दे आर मेड अप ऑफ which material they are made up of, they are made up of melamine. Okay, melamine are mostly used to resist the heat and it is used for making floor tiles, kitchenwares and fabrics which resist fire. तो ऐसे फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज होता है जिसमें हीट रेजिस्ट करता है, जो हमने एक एग्जांपल देखा था, दैट इज फायरमैन कोट, यानी कि देखा होगा फायरमैन जो पहनते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ मेलामाइन, वन काइंड ऑफ. Next is what are the examples of thermosetting plastics. So you could see that crockery, you can see that. Next is the handles of any pan, or you can see that switches over here. So these are the examples of thermosetting plastics. Next we will see about these are the examples. We'll see that polythene and PVC are some of the examples of thermoplastics. These are used for making toys, combs and various types of containers. We'll also see that thermoplastics are soft and flexible. Now we'll see the topic, that is thermoplastics, exactly opposite to of thermosetting. They are not elastic like rubber and springs. ये इतने भी इलास्टिक्स नहीं हैं जो रबर और स्प्रिंग की तरह दिखते हैं, बट दे मेल्ट ऑन वार्मिंग एंड रीगेन शेप ऑन कूलिंग. तो हीट करने पे मेल्ट हो जाते हैं और कूल करने पे अपने ओरिजिनल शेप पे फिर से आ जाते हैं. Thermosettings can be drawn into fine fibers, molded to any desirable shape, and thermoplastics can be designed into any shape. Next is examples of thermoplastic. You can see that we have already seen toys, containers, plastic boxes, forks and spoons. Plastic spoons होते हैं, glasses होते हैं, right? So these are the examples of the thermoplastics and thermosettings. Now we'll see the difference between both. Now here
change their shape easily on heating and can be bent in any shape. That is thermoplastics. Right now we have seen. And thermosetting, which do not change their shape even on high temperatures. फॉर्म लीनियर, ये ध्यान रखना, थर्मोप्लास्टिक लीनियर पॉलीमराइजेशन है और थर्मोसेटिंग क्रॉस पॉलीमराइजेशन है. ओके, एग्जांपल्स क्या है? पीवीसी. पीवीसी का फुल फॉर्म तुमने देखा होगा, पीवीसी के पाइप्स यूज होते हैं. कभी भी तुम देखना प्लास्टिक के जो पाइप्स है उसके ऊपर लिखा हुआ पीवीसी. पीवीसी मीन्स व्हाट? पॉलीविनाइल क्लोराइड. फुल फॉर्म यू मस्ट नो अबाउट दिस. एंड पॉलीथीन. पॉलीथीन जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं. बेकेलाइट एंड मेलामाइन, अभी अभी मैंने आपको बताया बेकेलाइट एंड मेलामाइन का यूजेस. Next is used for making combs and containers and used for making electrical switches, kitchenwares, etc. Here, what are the properties of plastics? ये very important है, थोड़ा ध्यान रखना इसमें. और ये सारे properties, you must learn these properties, and especially from your textbook. This all words are written from your textbook itself, so it will be easier to understand. Plastics do not react with water and air, इसीलिए जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है. इसीलिए हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा दैट इज नॉन रिएक्टिव. दे डू नॉट करोड इजीली, जंक नहीं लगता है इसमें. नेक्स्ट इज that is why they are used to store various kinds of materials including many chemicals. Chemicals are also stored in plastics also. Okay, so now next property is plastic is light, strong and durable. इसीलिए देखना most of the applications are of plastics. Why? Because they are very light, durable, long time के लिए रह सकता है and can be molded into different shapes and sizes. Plastics are generally cheaper than materials. इसीलिए देखना metal boxes अब धीरे धीरे उसका यूज कम हो चुका है, वरना पुराने टाइम में metal boxes बहुत ज्यादा यूज होता था घर पे. कंटेनर्स बहुत heavy कंटेनर्स रहते थे, but nowadays that has been replaced by plastic boxes. So they are widely used in industries and for household articles. पहले हम आयन के लोखंड के पाइप यूज करते थे फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन, बट नाउ प्लास्टिक्स हैव बीन यूज्ड और सस्ते में भी मिल जाता है और लॉन्ग टाइम भी चलता है कंपैरेटिवली टू मेटल पाइप्स. So this has been a drastical change in our day-to-day life that plastic is overcoming all those metal appliances. Next is plastics are poor conductors. Conductors, we know that conduct electricity. Poor conductor means what? It doesn't conduct heat and electricity. So एक एंड से अगर मैं हीट अप करूं और दूसरे एंड पे मुझे हीट फील नहीं होता. If this happens, then it is difficult for me to hold the pan because वो तो बैकलाइट से बना है. So how it is possible अगर हीट ट्रांसफर हो रहा होता तो. So plastics are poor conductors of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made up of प्लास्टिक. सो ये देखना स्क्रू ड्राइवर्स के भी हैंडल्स प्लास्टिक के होते हैं. टेस्टर जो देखा हो, टेस्टर किस लिए यूज होता है? वी यूज टू चेक वेदर करंट इज देयर और नॉट, और करंट फ्लोइंग इज देयर और नॉट. सो दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक. वो प्लास्टिक से क्यों बनाया? क्या? बिकॉज हीट ट्रांसफर नहीं होता, करंट भी फील नहीं होगा, इजी रहता है. Handles of frying pans are also made up of plastic, which I am repeatedly saying to you. Next is about plastics and the environment. अभी प्लास्टिक से क्या होता है? We know that plastic is adversely affecting our environment. सूरत में around 6 months पहले प्लास्टिक बैन होने का ऐसा कुछ अपडेट चल रहा था. नाउ बैन करने के लिए हमने एक माइक्रो प्लास्टिक, माइक्रोन वाले, लेस माइक्रोन, माइक्रोन में कैलकुलेट किया जाता है. माइक्रोन जितना कम होगा उतना ही इजीली डिकम्पोज हो सकता है. यू कुड सी दैट सम प्लास्टिक्स आर वेरी थिन. अब अगर आपने उंगली से भी आप स्ट्रेच कर दो, इफ यू टीयर लाइक दैट एंड देन आल्सो इट विल easily tearable. Why? Because the micron is very less. Micron क्या होता है कि क्वालिटी, जिसकी वजह से क्या होता है इजीली डिकम्पोज हो सकता है. एंड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक्स, एनिमल्स यहाँ पे आजकल तो बहुत इजीली स्ट्रीट में घूमते रहते हैं, तो क्या करते हैं? खाने की वजह से वो प्लास्टिक भी खा जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हैज बीन आइडेंटिफाइड दैट लॉट ऑफ प्लास्टिक्स हैव बीन कलेक्टेड इन दी बैग्स. इंडिया में एक रिसर्च हुआ था, एक सर्वे हुआ था. व्हाट इट हैज बीन डन, जो एनिमल्स घूमते हैं, तो जितने भी डेड एनिमल्स हो जाते हैं ना स्ट्रीट में घूमने के बाद, तो उनके पेट को अगर कट करके प्लास्टिक निकाला गया, अराउंड 5 to 6 kgs ऑफ प्लास्टिक्स हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम देयर स्टमक. ये ऐसा सिचुएशन इंडिया में है. इसीलिए हम प्लास्टिक का लेस यूज करना है. प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या? इट मीन्स दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी
इजीली डिग्रेडेबल, इजीली डिकम्पोज, जो चीज इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं, इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, then we'll say that it is non biodegradable. Biodegradable means what? That can easily decompose. So ये definition आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, you have to read it. And scientists have discovered biodegradable plastics which can be broken down by sunlight, but it will take many years. Still माइक्रोन्स लेस होने के बाद भी डिग्रेडेबल हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि एक महीने के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा. इट इज नॉट दैट. इट विल टेक एटलीस्ट फ्यू इयर्स इन द सेंस 5 years 6 years 7 years, तब जाके वो धीरे धीरे डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है. तो इतने में तो कितने और प्लास्टिक्स जमा हो जाएंगे. ओके, सो वी मस्ट try to use less amount of plastics, and this is what all about plastics. And the end of part 2 gets completed. So this chapter also completed over here. After watching this video, make sure that you read each and every topic from your textbook, because textbook is very important. If you don't read from your textbook, you will not face and you will not keep an habit of reading it, otherwise you will find difficult in higher studies. So I'm winding up here. Thank you.